So how many have you joined the GDSC group, the CS Society group on WhatsApp? आप लोगों में से कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? ओके, दैट्स गुड। और आप लोग GDSC के मेंबर्स भी बन गए हैं? Or the CS society. Like if you have joined either of those, so please raise your hands. और apart from that कोई इसके अलावा किसी source से आया हो, like from other society or anything आपको पता चला हो, तो you can write it in chat box. We wanna see कि हम how our marketing is work. So just raise your hand or write it in the chat box if you are from any other source apart from the CS group या GDSC. Apart from these, अगर आप हैं तो kindly share it in the chat box. ऑल्सो सारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें जिन जिनका है इंस्टाग्राम, so that you guys can stay updated with everything that's going on in the society. Okay, someone is from Islamia University. Islamia University, Bahawalpur, right? Fatima from grade 4. That's great, Fatma. You're on the right track. So we have a very young member among us from grade 4. So let's bring it. Okay. We have people from FAST as well. So welcome everyone. जहाँ जहाँ से भी आप हैं. And from MLSA as well, Microsoft Learn Student Ambassador. Welcome. Ghost is from UET Lahore, Iran University. Okay, that's really surprising that mostly people are from other universities. Yeah. Welcome everyone. So we are gonna start very soon. And thank you for waiting and thank you for being here. Those who have raised their hands, do you have any question or is it from like previous questions we asked? Najaf, Before we start, like if you have any questions, आपके दिमाग में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है, chat box में लिखें, कोई मसला नहीं है. Don't feel embarrassed or anything. okay, we are gonna start in a few minutes. तो uh, just wait a few minutes. तो और कोई members अगर join कर रहे हो तो we are waiting for them. So we'll start at exactly 6 and 6:05. Yes, we will be doing hands-on exercise. First, we'll give a brief theoretical theory about it. हम थोड़ा सा explain करेंगे कि what is Canva और about our society and everything. फिर उसके बाद हम hands-on samples वगैरह भी दिखाएंगे. तो सारा कुछ होगा इंशाल्लाह. We'll cover as much as possible in one session. तो just bear with us, inshallah. And apart from that, we'll include fundamentals of designs and the problems that जो market में the designers are facing. We'll cover those as well. तो उसमें हम बताएंगे what's the difference between a good design and a bad design. And apart from just using the tools, आपको how can you be more creative? What resources can you utilize? So we'll be covering everything inshallah. But we have a limited time, so we cannot like go into every detail in this session. But we'll try our best.
I think without further ado, let's just begin with it. Okay. We are gonna start in a minute. We just 1 more minute and then we're gonna start. Okay, guys, we are gonna start. So if you'll have any questions, just write it in the chat box, or again, if we miss it, unfortunately, so you can like write it again. So okay, let's just start. Before starting, we would like to introduce ourselves, our societies which we are representing here. So first of all, Ibrahim, please. So, my name is Ibrahim Mohammed Mir, and I am a student of UMT Computer Science Department. And right now, I'm just finishing up my fifth semester. So basically, I'm the vice president of Computer Science Society and the non-technical co-lead of GDSC as well. And right now, Sadan has joined me in this session. Please introduce yourself, Sadan. Hello everyone, I hope you're doing good. I'm Saden Heather. I'm a student of software engineering from UMT. I'm serving as the co-lead of GDSC and the vice president of Rotaract Society of UMT. So apart from that, I have a past experience of graphic designing and I've been working in this field as a it is my sort of creative passion. So that is why this led me into now I've pursued training in this field. So I train people regarding graphic designing, and Ibrahim has a similar background as well. So we have planned this session, and what we'll be covering in this session is you can you guys can you guys see our screen? If you can see our screen, you can raise your hands. Okay, thank you. अच्छा, we'll just jump into it. तो the table of content is visible. तो आज जो हम cover करेंगे, we have done our introductions. तो हमारा जो आज का agenda it is like we'll tell you about the interface of Canva. What is Canva and how is it replacing the basic other design softwares. Actually, the thing is there is a huge misconception that Canva is going to replace the other softwares and the need for the graphic designers who have learned other softwares. We want to tell you about how what are the fundamentals of design जो आपको पता होने चाहिए to distinguish between good designs and bad designs or this is a topic जिसके अंदर which differentiates good designers from bad designers. You know, everyone can search on YouTube, learn a tool, and then start working on it. Like in this part, fundamentals of design is what we'll be emphasizing on और यही आपको सिखाएगा how can you make your designs better with that. So apart from that, we'll be sharing sample works. जिसके अंदर we'll start from a bad design, we'll turn into a good design, then we'll move to a question answer session where we'll be answering your questions and queries. And in Q&A sessions, we'll also be teaching you how to make money out of using Canva, like how can you present your services to other people और आप किस तरह freelance कर सकते हैं इसके अंदर because many people are doing it and if you're really good at it तो आप इसको you cannot like go very advanced with it and design everything लेकिन जो most of the design things like brand identity design and similar so you can learn you can utilize Canva to do it. So or the last thing वो हम we'll have a small competition जिसके अंदर the one with the we'll share the details. The one with the best design will get free access to Canva for a year. So without any more delay, let's start with the interface and Ibrahim will be teaching the interface. Okay, let me share my screen with you for showing you the interface and getting familiar with it.
ओके, तो एज यू कैन सी कि ये एक बेसिक जो उसका इंटरफेस है, जब आप लॉग इन करते हैं तो दिस इज द इंटरफेस यू गेट। सो बेसिकली यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक ये होम का मिल जाता है, टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट्स। सो टेम्पलेट्स आर बेसिकली प्री डिजाइंड आइडियाज या फिर जस्ट डिजाइन इन जनरल जो आप यूज कर सकते हैं टू मॉडिफाई इट इनटू योर ओन डिजाइन, या फिर उसको आप उसी डिजाइन को यूज करते हुए जस्ट फिल इन द इंफॉर्मेशन, और आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस और टू सेल टू अ क्लाइंट। लाइक मी पर्सनली आई हैव डन दिस, मैंने क्लाइंट्स को प्री मेड टेम्पलेट्स भी बेची हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट, और क्लाइंट किस तरह का, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी हेल्पफुल। तो टेम्पलेट्स में अगर हम जाएं तो हमारे पास लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स आ जाती हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डॉक्स का सेक्शन, यहाँ पे आप किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। दोज कैन बी प्रोफेशनल, वर्क रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, जिस तरह की डॉक्यूमेंट आप उसको यू कैन मेक दैम। वाइट बोर्ड इज अ सिंपल वाइट बोर्ड, बेसिक्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप उस पर जाओ और अपनी मर्जी का किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट करो। अच्छा, इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो काफ़ी लोग जो हैं अब सोशल मीडिया पे, जिनका कोई किस्म का भी छोटा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, या फिर किसी भी किस्म का सोशल मीडिया प्रेजेंस है, दे आर यूजिंग दिस कैनवा, यूजिंग कैनवा टू क्रिएट सम अमेजिंग स्टोरीज और ये वो। तो ये भी एक सेक्शन है इसका। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट पे आए तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे दे इट गिव द परफेक्ट रेजोल्यूशन। जैसे आप देखते हैं, अगर आप कोई अपनी पिक्चर कभी पोस्ट करते हैं तो उसमें आपको उसको क्रॉप करना पड़ जाता है कभी कभी, और कभी उसको मतलब वो फिट टू स्क्रीन नहीं आ रही होती। अब इन्होंने जो स्क्वायर दे दिया आपको, इट हैज़ द एग्जैक्ट डायमेंशंस फॉर एन इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इट्स अ प्री डिफाइंड सेटिंग, और सारा कुछ पहले से मिल जाता है आपको। और आप इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर योर बिजनेस, शर्ट्स का, आपका कोई कपड़ों का काम है, आप लोगों को किसी भी किस्म का काम है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन आप इसको क्लाइंट्स पे भी यूज़ कर सकते हो। देर आर पीपल हु आर पेइंग यू टू मेक इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर देम। आपने उनको वीकली बना के देनी होती है, मंथली बना के देनी होती है, और वो आपको उस चीज़ का पे कर सकते हैं। सिमिलरली विद फेसबुक पोस्ट में भी रेजोल्यूशन ऑलरेडी सेट होती है, और सेम सारी सेम चीज़ें। प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस की टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं, लाइक एनीथिंग यू नीड, फ्रॉम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस टू योर यूनिवर्सिटी, और इसी तरह। Acha, and in presentations, there is a thing कि if you go to presentations, you'll find different templates और इसके अंदर the mind blowing thing is कि इसके अंदर animations भी included होती हैं. So like you can use animations, आप इसको and you can turn it into a video और आप उसको play कर सकते हो presentation, आप उसको अपनी मर्जी से like while you're presenting you can also play it. और इसके अलावा it works as a general PPT presentations. In PowerPoint presentations the drawback is कि आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, you're manually adding everything. लेकिन in Canva you just pick up a template, आपने अपना text उसमें add करना है, और even you can merge different types of templates, like I can use this template along with this text and these objects. तो it totally depends on my creativity और मैं कितना explore करता हूँ इसको. So apart from that, we won't go into details about the presentation, but we will be showing you how you can create your own. So Ibrahim, और इसी तरह मतलब आपको हर किस्म की जो है टेम्पलेट मिल जाती है इसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। that was just an overview of template. और अच्छा, the good thing about the template is कि you'll find template for almost everything here. आपने जो कुछ भी डिजाइन करना हो, flyer, portrait. अच्छा, और इसका एक अच्छी चीज ये, when you're manually designing something on a software like Photoshop or Adobe Illustrator, आपको उसके dimensions वगैरह margins manually खुद set करने पड़ते हैं. लेकिन इसके अंदर if you select anything, तो वो आपको margins और उसके sizes perfect देगा. समटाइम्स यू डू पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो उनका कभी ऊपर से वो क्रॉप आउट हो रही होती, कभी उनकी साइड्स फिल नहीं हो रही होती. तो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक कि जब हम मैनुअली डिजाइन या एडिट कर रहे होते हैं तो हमें इससे डायमेंशंस का नहीं पता चलता. लेकिन इसके अंदर द थिंग, और इसके अंदर जो आपको, लेट्स से आई गो टू अ बिजनेस कार्ड और मैंने यहाँ पे आई शो यू समथिंग कि मैंने ये पैक किया. इफ आई गो और मैं इसको
इसको कस्टमाइज करता हूँ तो मुझे इसकी रिकमेंडेशंस में आई गेट ऑल ऑफ दीज टेम्पलेट्स, मैं इसका कोई भी इनमें से टेम्पलेट्स के एलिमेंट इस वाले डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। एंड द गुड थिंग अबाउट कैनवा इज कि आपको जितने भी टेम्पलेट्स उस वक्त सजेस्ट होते हैं एंड दे आर ऑफ द सेम साइज। सो इफ आई पिक एनी एलिमेंट लेट्स से फ्रॉम दिस येलो बिजनेस कार्ड एंड आई पेस्ट इट ऑन दिस, तो मुझे उसमें उसको रीसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्दर मोर जब हम आपको डिज़ाइन फिट करके दिखाएंगे तो आपको मज़ीद इसका बेटर आइडिया हो जाएगा। अदर देन दैट, अगर हम इसके टॉप बार पे जाएं तो टॉप बार में ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट है। इट्स अगेन सेम थिंग कि आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं विच यू कैन यूज़ टू क्रिएट डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस की है, एजुकेशन की है, और प्लान एंड प्राइसिंग। अच्छा, कैनवा में दो चीज़ें हैं। एक तो इसका प्रो वर्जन होता है विच इज़ पेड, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आप यू कैन मेक मनी यूजिंग इट। तो द फ्री वर्जन इज ऑल्सो प्रिटी बेनिफिशियल। आप उसको भी यूज़ करते हुए मोस्टली चीज़ें कर सकते हो, थोड़ा सा लिमिट हो जाते हो आप। अब इसमें ये है कि इसका ये क्रिएटर डिज़ाइन वाले पे अगर जाएं तो वट एवर डिज़ाइन यू वांट टू क्रिएट, वट एवर थिंग यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, आप यहाँ पे सिंपली जस्ट सर्च इट एंड यू गेट द सैम्पल फॉर इट। अब हम अगर बिजनेस कार्ड की एग्जांपल ले लें तो ये देखें यहाँ पे बिजनेस कार्ड की हर किस्म के एवरी टाइप ऑफ बिजनेस कार्ड यू विल गेट द ऑप्शन टू मेक इट। और यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द बिजनेस कार्ड यू गेट द डायमेंशन एज वेल। पोर्ट्रेट में द डायमेंशन आर डिफरेंट, सेम गोज फॉर द स्क्वायर वन, द राउंडेड वन। तो every card has its own dimension, so you can just go into any one of those and create your own. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी मिस दिस, और इसके अंदर आपको बिजनेस के डिफरेंट वो यूज केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइक आप इसमें यू कैन, अच्छा, द गुड थिंग इज कि इसमें आप काफ़ी सारे प्रोसेसेस विद द प्रो वर्जन यू कैन ऑटोमेट इट, आप यू कैन शेड्यूल इट एंड डायरेक्टली पोस्ट टू योर सोशल्स, वो भी इसमें इसके अंदर वी हैव दैट ऑप्शन। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से आपको, लेट यू हैव अ ब्रांड रिलेटेड टू रियल एस्टेट, तो इफ यू गो टू दिस पार्ट इट विल सजेस्ट यू द कंटेंट रिलेटेड टू रियल एस्टेट, और वो हर सारी चीज़ आपकी सर्च ऑप्टिमाइज करेगा। कमिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, Canva is very suitable for teachers and students, like teachers can set up their classrooms, they can add their students, और वो एक ही डिज़ाइन पे they can work simultaneously. Let's say a design or a presentation has 12 to 13 pages, तो a teacher can share the link, और जो उसमें teammates they can collaborate, जो students हैं वो आपस में एक ही डिज़ाइन पे collaborate कर सकते हैं, the teacher can see the work. और similar for the students, there are many teacher resources, और अच्छा हाँ, the Canva, if you have an education related email to Canva, or if you just have to apply for it, तो teachers इसमें, teachers can even access the free Canva. So if there is anyone, any teacher among the audience here, so it is important कि आप you approach Canva or you request the free access to you do get free account, or just we'll just leave it, or you can explore these options on your own, you'll find many interesting things here. And coming to design spotlights, we have already discussed that. कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ टीम्स, इसमें लाइक गूगल टीम्स वगैरह का जो सीन है इसमें भी यू कैन क्रिएट टीम्स, यू कैन ऐड देम टू योर प्रोजेक्ट्स। सो वट एवर you're working on, for example you're creating an Instagram post, I keep coming back to that example, but आप Instagram post बना रहे हो और you've gotten busy with something else, आप कहीं फंस गए हो, and you have a teammate with you for whatever thing it is. So what you can do is simply just send him the link and they can continue where you left off. तो बेसिकली आप इसमें कलेक्टिवली भी डिजाइन बना सकते हो। तो लाइक आपको क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, आप कलर स्कीम नहीं समझ आ रही एंड अदर पर्सन इज गुड एट इट, तो वो वाला पार्ट कर सकता है। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर टीम वर्क एज वेल, और सोलो भी कर सकते हो आप। सो अब आई गेस I personally use it for every project and presentation. Like I invite my team to the design page. वो हम आपको तरीका है, we will show it to you. So it is just in general overview. हम आपको इसलिए बता रहे हैं, you can explore things on your own. We won't be able to discuss everything today in this session. लेकिन do explore these options. Write these down. उसके अंदर अपनी team को you can work on a design simultaneously. आप even ये भी देख सकते हो, if anyone is dragging or adding new text, तो वो आपको live at the same point आपको वो शो हो रहा होता है। अच्छा, कमिंग टू द
मेन होम पेज अब इसमें ये है कि आपने you have search for templates, आपको different themes already मिल सकते हैं. On the top of the page you can see New Year, food, Christmas, birthday, and if you press on it तो आपको हर size के हिसाब से accordingly उस तरह के content suggest हो जाएगा. So I guess that is enough for template. We'll move next part now, or let's just wait for it to. अच्छा, we are back to the home page. We've explored the templates. Uh, so this is the like pop-up menu और ये आप इसको press करेंगे you can open it here if it doesn't show up on your screen. You can go to your projects. आपके projects के अंदर आपके साथ जो कुछ share हुआ हुआ है the images you have uploaded. For example, let's say we were designing these projects, तो ये हमारे projects show हो रहे हैं. You can create your folders. आप अपने folders को even share भी कर सकते हो और उनको hide भी if you're working on your own तो आप you can hide your folders और वो आपको visible नहीं होते. Apart from that, let's jump back to the home page. You can explore these options. अच्छा tools, अब tools में आते हैं. अच्छा, they are very interesting. अब let's say you have a brand, a clothing brand. तो आपने अपना brand का सब कुछ custom setup किया हुआ है. Sorry about that. आपने अपना brand का सब कुछ custom setup किया हुआ है. You have your logo, set of fonts और जो आपने already रखे हुए हैं और you use the same font, same logo on every design. तो इंस्टेड कि आप एवरी टाइम मैन्युअली अपने डिज़ाइन में वो फॉन्ट्स ऐड करो, यू जस्ट गो टू द मेन्यू, यू फाइंड योर फॉन्ट और आप उसके बाद उसको ऐड करो. तो दिस कैनवा गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप अपना लोगो, अपना कलर पैलेट और अपना जो फॉन्ट है वो प्री डिसाइडेड आप एक सेटअप कर लो एंड यू कैन जस्ट इंक्लूड इट इनटू योर डिज़ाइन विद अ सिंगल क्लिक. लेट्स से आई हैव अ डिज़ाइन, मैंने एक रैंडम टेम्पलेट लिया और मैंने उसके अंदर अपने ब्रांड I have to customize it according to my brand. What I'll do is कि मैं brand kit में जाऊँगा. This option is called brand. I'll just press on the brand kit. वो उस template के colors उसमें जो font है it will change it automatically to this the font I have added to my brand. So do explore this option. It is very handy and we often use it. एंड ब्रांड्स को अगर आप देखें तो दे यूजुअली फॉलो थीम. तो मतलब उनके इफ यू गो टू देयर वेबसाइट, देयर इंस्टाग्राम पेजेस, एवरीथिंग इज इन अ थीम, लाइक देयर फॉन्ट्स, देयर कलर्स. तो ये एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी जरूरी चीज होती है कि आपका जो है ब्रांड कलर, ब्रांड फॉन्ट, ब्रांड लोगोस, दे आर सेम फॉर एवरीथिंग, every social media platform you have. So these are the things that you have to keep in mind whenever you're creating something, कि हमारा जो है एक थीम वो मेंटेन रहे. ओके, कमिंग टू द कंटेंट प्लानर, ये भी एक बहुत हैंडी टूल है. तो इसमें यू कैन शेड्यूल और ये वर्क्स लाइक अ कैलेंडर और आप इसके अंदर ना अपना यू कैन ऐड योर टास्क. तो ये आपको रिमाइंड करवाता है कि यू हैव टू डिज़ाइन दिस. और सबसे इसमें जो मज़े का फीचर दैट आई लव इज you can schedule an Instagram post. You can add your Instagram and it automates it. आप अपना इसमें लिंक वगैरह ऐड कर देते हो. You give the access to the Canva और आपने अपना डिज़ाइन एक प्रिपेयर करके रख दी है. You just schedule it और उसका captions और tags ऐड कर देते हो. It automatically gets posted. और इसके अलावा you can connect other social accounts as well और you can explore और आप you can integrate it with your Google Calendar as well. Apart from that, there are other okay. There are other apps as well और वो हम we will like we'll talk on these apps later. जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको डिज़ाइन मेन्यू में दिखाएंगे. एंड another very handy tool है स्मार्ट मॉकअप्स जो अभी इसमें रिसेंटली इंक्लूड हुआ है. द मॉकअप्स है बेसिकली आपको ये प्रेजेंटेशन देते हैं कि हाउ योर डिज़ाइन लुक्स. लेट्स से आपने एक कप का डिज़ाइन बनाया और आपने देखना है कि how does it actually look in real. आप क्या करोगे, you'll just pick up a mockup और उसके अंदर आप अपना डिज़ाइन को पेस्ट करोगे एंड इट विल शो यू कि ये कैसे असल में लगेगा. लेट्स से मैंने अपना यहाँ पे कैन यू सी माई कर्सर. तो यहाँ पे मैंने अपना लोगो आई डिज़ाइंड लोगो. लेकिन अब वो मैं खुद जब मैंने डिज़ाइन किया, इट इज़ जस्ट अ फ्लैट सरफेस और एक वाइट बोर्ड पे डिज़ाइन हुआ है. आई डोंट नो हाउ इट लुक्स ऑन माई मग. अब मैंने क्या किया, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन टू दिस टेम्पलेट. जब मैं इसको ओपन कर लूँगा आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन इट और वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा ऑन दिस कप. सो आई बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरा डिज़ाइन एंड रियल कैसा लगता है. तो दिस इज़ वेरी हैंडी टूल. और आप जब भी अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे होते हो टू अ क्लाइंट और टू एनी वन, इट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि आप उसको इन रियल दिखाओ कि हाउ डज इट लुक इन रियल.
वरना द क्लाइंट्स आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, और को नहीं पता चल रहा होता कि बट this design is going to look like when you have implemented it. So it's the best approach कि you use it, कि you use mockups to present those design. और इससे पहले previously when we used Photoshops for mockups, तो वो बहुत ज़्यादा time लेता है, and it is learning Photoshop is not easy. It has a very steep curve, और उसके अंदर मॉकअप्स बनाना, उनको एडजस्ट करना एंड एक्सपोर्टिंग, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड टायरिंग प्रोसेस. यू Canva has automated that process. और अब ये वाला जो you can explore the mockup thing as well. और जब हम अभी डिज़ाइन एक बना लेंगे, we'll try to make a mockup. अब नेक्स्ट, अच्छा, let's just without any more discussion, let's just jump to the tools, और हम दिखा, let's create a design. और आपका जो डिजाइनिंग पैनल है, how does it? अच्छा, I forgot to mention Canva has its own desktop app as well, और उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है. तो if you like don't like to आपका इतना कोई प्रोफेशनल यूज नहीं है, you just use it for basic post और अपना एक आपने छोटा सा सेटअप किया, you can use it on your mobile phone as well. और it has the same features as the web application, लेकिन उसमें बस you're just limited, the view is limited because you're working on a very small screen. Apart from that, let's just, we are on the design panel, or this page is called Canvas design panel. और इसके अंदर जो starting from the, yes. Starting from the panel, we have first design section. In the design section, you can see again अब आपने कोई भी design पीछे select किया है, like Instagram post, business cards, flyers, whatever you've decided to choose. Once you're here, once you've chosen that category, आप यहाँ पे जब आएंगे तो design के option आएंगे. Design में templates हैं for that very niche, for that very thing. तो हमने यहाँ पे चूज किया हुआ इंस्टाग्राम पोस्ट. अब इंस्टाग्राम पोस्ट में आप देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए हैं, फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर योर प्रोडक्ट्स, वट एवर इट इज. तो ये उसके हर किस्म के पोस्ट टेम्पलेट्स आ जाते हैं. यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं. ये जो जिनके यहाँ पे लिखा होता है पेड होते हैं, द अदर्स आर फ्री. तो ये इसका जो है डिज़ाइन का ये है. अब इसमें स्टाइल्स में अगर चले जाएं तो वो फिर आपको अपनी मर्जी का आपको कलर पैलेट वगैरह चूज कर सकते हो, इमेजेस पैलेट चूज सकते हो, फॉन्ट पैलेट सारा कुछ चूज करके तो वो आपको उस हिसाब से एक जो है टेम्पलेट दे देता है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है, इट रेंजेस फ्रॉम एनीथिंग फॉर फ्रॉम अ शेप टू अ फोटोग्राफ. सब कुछ होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे वीडियोस भी होती हैं, आपके पास एनिमेशन होती हैं, स्टिकर्स होते हैं, फोटोज होती हैं, लाइक एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ जो आपको अपने किसी भी डिज़ाइन में ऐड करने की ज़रूरत है वो यहाँ पे अवेलेबल है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइंस एंड शेप्स आ रही हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, स्टिकर्स आ रहे हैं. तो कुछ भी आपको चाहिए, इट्स अवेलेबल ओवर हियर. Coming to the next section, which is uploads. Uploads is basically anything that you're going to upload to use in your content. मतलब आपने कोई अपनी फोटोग्राफ करनी है, कोई लोगो करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप सिंपली जब यहाँ पे अपलोड करोगे और इसको क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा. दैट्स हाउ इजी इट इज. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द टेक्स्ट वन. टेक्स्ट वाले में आपके पास ये जैसे आप देख सकते हैं कि यू हैव थ्री ऑप्शंस, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट. तो वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट boldness, it will arrange it accordingly. तो whatever you click on, you'll get the same thing. अब जैसे यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट करें तो आप देख सकते हैं इसकी फॉन्ट की जो विड्थ है, जो थिकनेस है, इज क्वाइट स्मॉल. तो यहाँ पे आप कोई भी बॉडी टेक्स्ट यूज करना हो तो ऑब्वियसली वो स्मॉल ही हम यूज करते हैं. और यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स इसकी भी मिल जाती है फॉर टेक्स्ट एज वेल, लाइक वट एवर यू नीड. यू कैन सर्च एज वेल, कि आप सर्च करो कि दिस इज द टाइप ऑफ थिंग आई एम लुकिंग फॉर, सो यू विल गेट दैट एज वेल. जैसे यहाँ पे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर बर्थडे, फॉर अ परफ्यूम ब्रांड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज, अच्छा, a very important thing कि we often neglect के जो हम टेक्स्ट, जो ये हम ये फॉन्ट यूज कर रहे हैं, वो हम ऐसे ही कैजुअली कोई भी कर लेते हैं, बट फॉन्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजाइन, बिकॉज इट इज द एक्चुअल थिंग जो आपके डिजाइन और आपके मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है.
So it is one of the most important components of fundamentals of design as well. और जब those who are studying graphic design degrees might know that आपका font आपके design से match करना चाहिए. Let's say you have a very funky design, you're designing poster for a concert. So you don't have to use a corporate type design. अब आप उसमें कोई भी you can use a handwriting text like the one just I'm hovering the mouse. और इसके अलावा यू कैन यूज ब्राइट फॉन्ट और उसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो यू कैन ऐड दो लेकिन लेट्स से ऑन द अदर हैंड यू डिजाइनिंग अ सीवी or you cannot use the cursive font, you cannot use the glow font on your CV. So the use of right font is very important. और the और the जो font की design sense होती है, it comes with time or you explore more designs. So eventually you learn. So I would suggest that you guys explore it or go to Google, search about which fonts are suitable for what type of design. There are different options. If your design is related to technology, you can use futuristic ones, and that's it for the font. Font में I would like to add something as well कि font family is also very important. Like for example in this post you can see कि throughout जो है एक theme maintained है. Like उसने ऊपर something curvy use करके नीचे corporate style नहीं use किया. The whole theme is the same. So this is also something that you have to keep in mind while creating designs that your design fonts are not like contradicting with each other. और जो corporates होती हैं, every major brand they use a set of fonts और उनके एक font होता है family like और उसके अंदर different type के होते हैं. They find उसके अंदर उसी फॉन्ट में इटैलिक वर्जन भी होती है उसकी थिन वर्जन होती है उसमें बोल्ड वर्जन होती है सो दे यूज द सेम फॉन्ट्स अब उन्होंने जो हेडिंग्स होती है दे यूज बोल्ड फॉन्ट फॉर इट और जो उसमें सब बॉडी होती है दे यूज द मीडियम और जो थिन फॉन्ट होता है वो लेकिन द फॉन्ट फैमिली इज ऑलवेज द सेम so this is enough for the text and we'll jump to the next section which is projects. Projects basically इनका यहाँ पे होने का तो यही है कि again you don't have to go back to the home page. You have it over here, so you can access your existing designs up. You want to change something in them. You want to access them again, so you can just go to this project section and you can access them through here. The next one is background. So anything you're creating, you may need a background for it. So these are some samples for it. Like this is the whole page's background. तो इसको आप किसी भी डिज़ाइन है उसमें यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हम अगर we want to add this color, so you can see कि यहाँ पे it has changed the background. I'm gonna undo it. तो बाकी इसमें we have shortcut keys as well. तो वो आप डिजाइन के साथ we won't be covering the shortcut keys लेकिन because they are easily available on Google. You just search for the shortcut keys in Canva और ये आपके process को बहुत they just speed up your design process. और learning the shortcut keys is very important that आपको हर दफा design में you don't have to use mouse and press undo. Okay, moving on. Also, in this you can see कि landscapes, patterns, gradients, abstract ये different given है ताकि it's easy for you to use कि whatever thing you're working on it can help you कि हम इसको use कर रहे हैं. Secondly, with Canva Pro Access, आपको जितने भी backgrounds में pictures हैं, you get it for free. लेकिन if you're using the free version, तो काफी limited होता है और you only get access to a limited piece of work और ये जितनी भी you have to purchase every picture you're using in your design. So instead of purchasing every picture, why don't we move in buy the Canva Pro, get access to over I guess it's 2 million pieces of content जिसके अंदर elements होते हैं, backgrounds होते हैं, all these free pictures included. Also, if you're not looking forward to buying it, yeah, it's not the right moment for you. What you can do is always upload your own picture and then use it as the background. Coming to the logos section, again, it's for the brand kit. जो हमने पीछे explain किया था कि आपका कोई भी brand है, so you can just use your logo wherever you need it. For example, if you want to add your logo here, you just drag it and drop it over here. Coming to the apps में again, it's basically the summary of all the elements that we have shown you, all the options we have shown you. यहाँ पे photos, audio, video, charts,
ये सारी ऑप्शन में। अच्छा, I'm gonna explain the apps, क्योंकि जब when you're designing something advanced, तो ये थोड़ा सा जो apps है ना, ये बहुत आप आपका काम easy कर देते हैं in a way कि अच्छा इसके अंदर people think कि you can only create these static images या designs, but Canva now gives you the ability to create animations as well. आपने you can just upload a video or an audio, and you can use these elements and animate it. Let's say I've selected a font, ये just मैं आपको example दे रहा हूँ of the power of Canva के you can use animation now. I'll just click this font, I'll move to the top bar, which is the design menu bar, और इसमें I'll press on animate, और अब मुझे Canva में काफी सारी ऑप्शन मिल गई हैं to animate my text, और this is just for the text. अब it all depends on your creativity, आप सारे elements को कैसे एनिमेट करते हो। इसमें आपको कोई कस्टम एनिमेशन लाइक जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वैसी नहीं मिलती, लेकिन इफ यू यूटिलाइज योर क्रिएटिव एलिमेंट तो आप इससे डिजाइन बना सकते हो। लेट्स से मैं अब क्या करता हूँ, एंड दिस टाइम आई जस्ट पिक अप दिस सर्कल, मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ। लेट्स से इसको कोई भी इसकी मूवमेंट कर लेता हूँ। तो बट माई डिजाइन विल एंड अप एज वो क्या करेगा, अब मैंने इट विल टर्न इनटू ए गिफ, और ये 3-4 सेकंड का ये एक पोस्टर बन जाएगा। और होगा ये कि ये जो मैं इसका टाइम वगैरह आई कैन कस्टमाइज एवरीथिंग हियर, और कस्टमाइज करके आई कैन टर्न इट इनटू कि ये सर्कल इसकी इनिशियल पोजीशन मैंने ये सेट कर द वेरी लेफ्ट कॉर्नर, और फिर उसकी एंडिंग पोजीशन मैं इधर सेट कर दूंगा। आई टीच यू हाउ इट वर्क्स, और उसमें ये होगा दिस दिस सर्कल विल कम फ्लोटिंग बैक, और ये काफी अच्छे एनिमेशन इफेक्ट बन जाता है। ऑल्सो इसको एनिमेट करने का आपको ये भी फायदा होता है कि गिविंग द करंट एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम फॉर दोज हु आर रनिंग द बिजनेसेस ऑन इंस्टाग्राम, तो इट डज इज रील्स हैव अ वेरी has a better outreach to the audience. तो जब आप इसको रील में कन्वर्ट कर देंगे, यू गेट मोर व्यूज, यू कैन गेट मोर आउटरीच ऑन योर पोस्ट. सो it's preferred कि if you're using it for your brand purposes, you should turn it into a reel. अब हमारा बिकॉज वी कैन नॉट टर्न एवरी कंटेंट इनटू अ रील, तो हमें ये बेसिक एनिमेशन वाला फीचर है, इट कम दी हैंडी। सिर्फ हमने एक टेक्स्ट को लाइक एक हेडिंग को एनिमेट करना है, और वो सेकंड्स की एनिमेशन बन जाती है, एंड वी कैन इजीली यूटिलाइज इट एज अ रील। तो कमिंग टूवर्ड्स द ऐप, देयर इज पॉइंट फैच जो आपके डिफरेंट ब्रांड के लोगोस आपके डिजाइन में देता है। यू डोंट हैव टू लाइक मैनुअली डाउनलोड द पिक्चर, अपलोड इट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इट। पिक्स्टन ये आपके इलस्ट्रेशंस ऐड कर देता है, कार्टून द कॉमिक कैरेक्टर्स, और ड्रॉ बीटा इट इज स्टिल द टेस्टिंग वर्जन, लेकिन if when this feature will be added, it will be very handy as well for designers. अच्छा, when the draw feature will be added, तो ये आपको like the powerful softwares of Adobe, तो उनकी वाले you will have the ability to design your own stuff, or because this is a web application, it gets very heavy when you're drawing stuff on it. So it is just a beta version, but do explore it. कभी कभार you just want some, you just want to add something random to it, like just stories पे we add a creative font, we add our signatures, so we can utilize it for that. Sorry about that. Let's move back. अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द गूगल मैप्स, आप इसमें बाकी एप्लीकेशंस की तरह जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह यू कैन ऐड गूगल मैप्स टू इट, और वो इसमें आपके जो भी यू कैन जस्ट शो अप द गूगल मैप्स, और ये इट वर्क्स इन द रियल टाइम, और ये आपको उसकी जो लोकेशन है जस्ट लाइक ऑन द एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पे डिजाइन होती है, इट इज सिमिलर विद दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इट इज चार्ट्स। अच्छा, द गुड थिंग अबाउट इज कि आप इसको एक तो लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज because I don't want to spoil that design. Okay. And Yeah, I'll just delete it. Sorry about that. I've just added a page, और इसके अंदर I've just dragged the charts. अब इसके I can animate these charts, और मैं इसके अंदर जो भी अपना डेटा, और मैं इसमें ऑटोमेटिकली एंटर करूंगा, लेट्स से item 1 और ये सीरीज, इट इज एट 0। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो इट गेट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड डिजाइन। This is a very good thing जो it works in PowerPoint as well, लेकिन इसके अंदर you can, अगर आप उसमें if you're using these graph for your custom designs या Instagram post, तो वो आप PowerPoint में नहीं कर सकते। And another thing is कि आप इसके अंदर डेटा अपनी स्प्रेडशीट से उठा के कॉपी करके यू कैन पेस्ट इट राइट हेयर, वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली अपने ग्राफ को कस्टमाइज कर देता है।
और यहाँ पे इसका ऐड डेटा में गूगल शीट्स भी है एंड द CSV is the format for these spreadsheet files. You can go to the settings, show labels, or you can customize it. You can explore these options. Apart from that, more in the apps, QR code generator, generate your own QR code. इसके backend पे आप link लिखें और it works. हम we utilize it for our posts as well. हम जब Canva पे design कर रहे होते हैं, we generate QR using Canvas. और emoji add कर सकते हो. Draw beta we have already discussed it. और बस अभी for now these are the only important options. तो आई गेस वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. अच्छा, इसमें यू कैन सी दिस कि आप इतने सारे टूल से यू कैन इंपोर्ट योर मीडिया और इसी फॉर्मेट में लेट्स से एन इंस्टाग्राम फॉर्मेट जो उसमें पिक्चर का फॉर्मेट होता है वो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आएगा इन गूगल फोटोज जो इमेज का फॉर्मेट. तो द इमेजेस इन यू डेटेड जो होता है ना वो आपका खराब नहीं होता. इट कम्स एग्जैक्टली एज इट. मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ. दिस इज अ स्क्वायर टेम्पलेट ऑफ एन इंस्टाग्राम पोस्ट. इट हैज 1000 by 1000 रेजोल्यूशन जो इंस्टाग्राम का कस्टम कस्टम रेजोल्यूशन होता है. अब मुझे जितने भी सिमिलर मिलेंगे ना इसमें वो सेम साइज के होंगे. मैं एलिमेंट को ऐड करके न्यू पेज पे अगर ऐड कर दूं अपने और मैं उसमें से एलिमेंट्स इनके साथ चेंज कर सकता हूँ. तो इसके अलावा लेट्स सर्च. मैं आपको दिखा दूँ हाउ इट डज वर्क. अब मैं टेक्नोलॉजी इस पे सर्च कर लेता हूँ. चलो प्रोसेस. अब मुझे टेक रिलेटेड ऑफ द सेम साइज मैंने लेट से ये पोस्ट है. ये वेबिनार की पोस्ट है और मैंने इसको जरा थोड़ा इट इज अ टेक रिलेटेड वेबिनार. तो मैंने अगर इसको उस हिसाब से कस्टमाइज करना आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस टू ए न्यू पेज. ये जो ये वाले जितने भी टेम्पलेट्स हैं आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दीज और मैं इनके आपस में कस्टमाइज आई कैन यूज दोज एलिमेंट्स इनटू दीज डिजाइंस. और प्रीवियसली जिन लोगों ने कभी भी बाकी डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज किए व्हाट हैपेंस इज कि आपने सब कुछ खुद क्रिएट करना. इफ आई वांट डिजाइन एन एलिमेंट मुझे फॉन्ट से लेकर सब कुछ खुद क्रिएट करना पड़ता है. और अगर लेट्स से आई एम गोना ऐड दिस टू. अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आती है. यू कैन जस्ट अप्लाई द स्टाइल ऑफ दिस टेम्पलेट टू योर एग्जिस्टिंग पोस्ट. इससे क्या होगा जो थीम है इसका लाइक ये ऑरेंज और वाइट है विल चेंज टू दीज कलर्स और जो उसका फॉन्ट है इट बिकम फ्यूचरिस्टिक. तो आपने अगर सिर्फ अपना थीम चेंज करना यू कैन डू दिस वेल. और अगर मैं इसको लेट्स से I'll drag in this और अच्छा अब लेट से अब मैं आपको कैनवा का दिखा रहा हूँ. द बेनिफिट ऑफ कैनवा. अगर मैंने डिजाइन करना होता ये सब इन एडोबी इलस्ट्रेटर तो मुझे लिटरली पूरा दिन लग जाता बिकॉज इसका एक मैनुअली ये फॉन्ट ऐड करना उसको डाउनलोड करना एडिंग योर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वट एवर यू यूज. फिर आपने अलग फॉन्ट ऐड करने क्रिएटिंग होल बैकग्राउंड. और if you guys have any questions till now, you can ask, and then we'll move towards practical section. Just write it in the chat. Any questions, everyone? Let's just wait one more minute for the questions, and let's wait for the information to sink in, और and then we'll move towards the next section. जिसमें हम थोड़ा सा practical interface दिखाएंगे, drag and drop किस तरह होता है और how are we going to use the इसमें shortcut keys किस तरह यूज करते हैं आपने अपने डिजाइन में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं. बाकी we might miss some things because इतने short session में covering everything is not possible. So what you can do is just open up Canva, sign up for it, or just start creating your own designs. आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा. Start playing with designs. अपना एक post ले लें, add your own name to it. And to be honest, you'll start learning more when you do it practically. The more you do it, the more you learn. इसका basic rule ही है. Anything in life works that way. तो like मैंने जब start में design create करना शुरू किए थे, my margins were off. I was using some very bad elements. My color schemes were off. लेकिन I didn't give up. I kept on creating and creating. Still, till now, I'm learning, but at the same time, my designs are much better. They're much seeable now. पहले देखने के काबिल नहीं होते थे, लेकिन अब they're a lot better. So the more you create, the more you learn. Okay, Okay, no. let's move ahead.
move towards Okay. Okay. How can I get some columns of custom size? Okay, very good question. You अच्छा, this is the problem कि this is something I want to discuss at the end कि people think कि आपकी जो demand for the advanced software वो Canva के आने से कम होगी, which is true to some extent, लेकिन for something like and for architecture students, for engineers और जो advanced graphic designing करते हैं और आपको जब custom elements चाहिए होते हैं something very unique, you do need to refer to the other softwares. So this is, I hope Vasu, listen, your question is answered कि आप you cannot you should use the real software that are meant for that purpose. जो भी आप civil engineering में map or application whatever you create, तो you should use the apps that are created for that. और अगर आपके Canva में like you cannot create the beams and columns, you should or is let's just wait for the draw element to come. फिर उससे maybe that feature is included because sometimes I do design this kind of stuff as well. So this is a problem I do face as well. लेकिन इसका भी एक solution है. इसका solution ये you customly created और आप उसको अगर आपने किसी design template में use करना है आप उसकी PNG transparent background के साथ export करके you can paste upload it here और आप उसको यहाँ पे अपने template के साथ use कर सकते हैं. लेकिन if you want to design only those beams and columns और custom sizes, अच्छा custom sizes वैसे इसमें design हो जाते हैं. You can अब इसमें resize की option है, we'll explain it very soon. तो इसमें आप अपने custom size के हिसाब से चीजें बना सकते हो. और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें ड्रॉ टूल यूज कर सकते हो. नहीं तो इफ यू जस्ट मूव टू एलिमेंट्स तो आप उसमें लाइन टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो. जस्ट वेट अ मिनट. तो आप इसमें लाइंस एंड शेप्स को यूटिलाइज करते हुए थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा होती है मैनुअली बिकॉज आप उसमें ड्रॉ नहीं कर रहे होते. यू हैव टू जॉइन दीज थिंग्स मैनुअली लेकिन आप उसमें क्रिएट कर सकते हो. और बाकी दैट्स इट. आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. So just reply it in the chat box and we'll move to the question. Or let's I think let's go towards the good and the bad design part. Okay, there you can see there are like two posts that look very similar. अच्छा उस पहले बिफोर सॉरी फॉर नहीं go. अच्छा सॉरी फॉर द इंटरप्शन. अच्छा ये हमने हाउ डिड वी ऐड दिस. आई एम गोना रिमूव द एक्स्ट्रा डिजाइंस. अभी मैंने आपको हाउ डिड वी ऐड दिस ये Just हम remove it overall. लेट्स जस्ट यूटिलाइज दिस. तो व्हाट वी डिड इज कि हमने क्या किया. अ, हम सिर्फ इधर हमने एक मेन पेज पे अपना टेम्पलेट फॉर अ वेबिनार सर्च किया एंड वी जस्ट क्लिक्ड ऑन इट. उस पे कस्टम विल गो बैक टू द मेन पेज. लेट्स से हम यहाँ पे इस पे चले जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. हम इसको कस्टमाइज करेंगे. आई ओपन इट इनटू अ न्यू टैब और ये एक हमारा डिजाइन टेम्पलेट खुल जाएगा. दिस इज द प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी टू सेव सम टाइम हम कर चुके थे. दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ भी नहीं. हमने सिर्फ एक टेम्पलेट लिया एंड विल इम्प्रूव इट. और हमने उसको थोड़ा सा खराब कर दिया था सो दैट वी कैन शो यू कि इसके अंदर और एक गुड डिजाइन के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस क्या होते हैं. Coming back to it, I'm gonna close it. I'm gonna close it or Okay, so coming to the design, इसमें you can to the naked eye you won't see like much of problems. Comments में कोई बता सकते हैं कि like what are the problems you see here? Like do you see any problems? Yeah, this seems just fine. Guys, chat में थोड़ा सा बताएं हमें. कि इसमें क्या चीज एलिमेंट थोड़ा सा ऑफ करता है. एंड we'll show you कि इसमें बेहतर चीज या fonts is a good thing लेकिन ये इसके कस्टम fonts हैं. हम इसमें fonts improve कर सकते हैं. यूनिट में है. और या Aman just said phone number is not aligned, which is very good point. Hmm. और So as you can see, Aman, you've raised a very good point. The font size of the phone number and the emoji we're using here are very different in sizes. So what you have to do is your sizes should be very much aligned when you're creating anything. तो यहाँ पे आप देखें इसको सिर्फ सही करने के लिए all we need to do is just match the size of this
and you can see now it's aligned as well, and it's of the same size, so it looks much better now. Similarly, अगर हम इसमें year is wrong. Yeah. That's a very good point. Year is wrong. Okay, someone mentioned the color scheme, the pink at the right corner. अच्छा अच्छा, Yes. मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, द कलर स्कीम पार्ट इज वेरी राइट कि you're using ऑरेंज और आपने उसके अंदर एक पिंक सा ऐड किया. यू कुड यूज अ सिमिलर कलर, लाइक आप ब्लैक यूज कर सकते थे राइट कॉर्नर पे, विच वी आर गोना फिक्स बिकॉज वी हैव मेस्ड इट आवरसेल्फ. और अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसको. Acha, Komal has mentioned it looks boring, doesn't really grab the attention. Okay, Komal, uh, the text doesn't matter. To be honest, right now the text doesn't matter. We're just looking at the design part. तो हमें text पे हमारा focus नहीं है. लेकिन आपने अच्छा point दिया है कि it looks boring, doesn't really grab attention. So what can we do to make it grab attention? Like इसको हम क्या क्या कर सकते हैं? Like give us some examples because we want to make this session interactive. तो हम आपसे ideas लेके इस चीज को कर सकते हैं. और सेकेंडली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंटेंट, तो अगर कहीं डेट और टाइम वगैरह के जस्ट इग्नोर इट. अब अभी फॉर नाउ जस्ट लुक एट द डिजाइन पार्ट कि आपको डिजाइन में क्या क्या इसमें थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, एंड दैट पार्ट ऑफ इट बीइंग बोरिंग इज वेरी करेक्ट. और इट डज लुक बोरिंग. इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड अ गुड बैकग्राउंड. और इफ द कलर इज टू ब्राइट हम इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं. और जो पिंक उसके साथ है हम उसको जस्ट चेंज इट टू ब्लैक फॉर नाउ. अच्छा, इसमें there is also another thing. When you click on the colors for anything, like अगर आपने इसमें जाके colors करना है तो आपको document colors मिल जाते हैं. To match your color scheme आपको हर दफा color ढूंढना नहीं पड़ेगा palette में जाके. आपको document colors में ही वो सारे मिल जाएंगे जो इस post में हुए हैं. So what you can do easily is you can change the color from the document colors. So for example, we want to change this color. What we can do is go to the document colors and click on this one. So now the whole color scheme is aligned. और इसी तरह द पार्ट ऑफ इट इज कि समटाइम्स हम अपने कस्टम लोगोज अपलोड करते हैं, और व्हेन वी आर यूजिंग इट, व्हेन वी आर यूजिंग द जीडीएससी रोटोरेक्टर सीएस लोगोज, हम यही करते होते हैं, वी जस्ट अपलोड द लोगोज. और उससे ये होता है कि बिकॉज आपका जो डिजाइन, इफ यू आर लाइक रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड और समथिंग, आपका जो कलर स्कीम और आपको कलर पैलेट होता है, फॉर दोज हु डोंट नो, कलर पैलेट इज अ सेट ऑफ सिमिलर कलर्स जो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यू हैव सीन द गूगल के मेन पेज पे उनका दे हैव द रेड येलो ग्रीन ब्लू कलर स्कीम. तो हम उसमें सिमिलरली करते होते हैं कि वी जस्ट हमने अब उस कलर पैटर्न को फॉलो करना होता है इन मोस्ट केसेस. तो जब जब भी हम अपना लोगो वगैरह ऐड करते हैं, इट गेट्स एडेड एज अ पिक्चर. और फिर आपके पास में फन पार्ट कैनवा में ये है कि व्हेन यू आर एडिटिंग, लेट मी एडिट दिस, व्हेन यू आर एडिटिंग इट, तो आपको क्या होता है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे फोटो कलर्स की यूज Let's होती है. just add and show them. अच्छा, अब हाँ, ओके, वी कैन ऐड. So for example, I have a logo over here. So जब इसको ऐड कर देंगे हम, now what it does it is automatically grabs the color of the image added. तो अब इसका image जो है वो automatically आपके color palette में आ गया होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं this logo. So what you can do is to match the theme, you can use these colors. So इसको इस तरह use कर सकते हैं हम. हाँ. अच्छा, सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मैं ये अगर डाटा कैंप का, यू कैन सी द लोगो, अगर ये मैं ऐड करूँ, इट विल सजेस्ट मी ग्रीन एंड द बैकग्राउंड कलर एज वेल. और इसके अंदर अब चल, वी वर डिस्कसिंग द डिजाइन. इसके अंदर जो सबसे ऑफ चीज है कि यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ मार्जिन्स. आपके डिजाइन में एक टर्म यूज होती है, वी कॉल इट कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन इज बेसिकली कि आपका हर एलिमेंट किस तरह से कंपोज, लाइक हाउ इट लुक्स ऑन द स्क्रीन एज अ होल, आपका डिजाइन किस तरह से कंपोज है. तो इसका कंपोजिशन थोड़ा सा ऑफ है. वी कैन इम्प्रूव इट. फॉर एग्जांपल, हम इसमें जो लाइव वेबिनार है इसको सेंटर अलाइन, एक ये सेंटर, वी यूज सेंटर अलाइन की, जब हमारा ओवरऑल कंटेंट, ये जो भी वर्ड्स वगैरह वो ऑलरेडी सेंटराइज्ड, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, लाइक वी कैन अलाइन इट टू द कॉर्नर. और नाउ इट डज लुक बेटर. और ये एक मार्जिन, ये हमारा ना, लेट्स इमेजिन कि ये जो थोड़ा सा है ना, ये हमारा पेज का मार्जिन है. अगर हमारा कोई चीज भी इस मार्जिन से बाहर होगी तो इट विल लुक बैड. और हमने इस मार्जिन को फॉलो करते हुए सबको अलाइन. और अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आपको कैनवा में, इफ यू ट्राइंग टू ड्रैग इट समथिंग ऑफ द मार्जिन, तो इट शोज यू, ये आपको एक डॉटेड लाइन शो हो रही होगी. दिस इज, इट शोज यू कि आपके कंटेंट किस तरह से अलाइंड है. और जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, दे डोंट शो यू दिस.
और आपको बहुत प्रॉब्लम होती है समटाइम्स, यू गॉट टू जूम इन टिल द एंड, और आपको खुद ही उसको मैन्युअली अलाइन करना पड़ता है यूजिंग द टूल्स। और ये प्रोसेस इससे काफ़ी फास्ट हो गया है। सेकेंडली, अब द प्रॉब्लम विद द फॉन्ट्स इज कि हमारा जो मेन फोकस था लाइव वेबिनार, ठीक है वो हाईलाइटेड है, लेकिन देर इज सिंपल एज एक और इसके अलावा हमारा एक सब टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। सो द कंटेंट गेट्स स्कैटर्ड, और इसके अंदर हमें समझ नहीं आ रहा कि व्हाट आर एम्फेसिस ऑन इज ऑन, और हमारा जो यहाँ पे फोकस था वो इट वाज ऑन लाइव वेबिनार, और ये एक और शार्प कलर्स वाला ऑब्जेक्ट, हमारा सारा एम्फेसिस इस पे चला गया इंस्टेड ऑफ दिस। फिर अब वो यूजर का, अच्छा वेन एवर यू आर डिजाइनिंग, ये थोड़ी सी एडवांस चीज है, लेकिन यू शुड बी अवेयर कि व्हेन यू लुक एट द डिजाइन, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोना सी। तो यू वांट द जो व्यूअर है आपने उसको देखना है कि सबसे पहले वो ये देखे, तो द अदर एलिमेंट शुड नॉट बी दिस मच हाईलाइटेड। यू शुड लाइक, आपको अच्छा टू चेंज द फॉन्ट, और या जो भी एलिमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस होती हैं, इट इज ऑन द टॉप पैनल। यू जस्ट क्लिक ऑन इट, और इसमें मुझे सारी ऑप्शंस मिल रही हैं, मैं सकता हूँ दिस इज वेयर यू गो, वेयर यू फाइंड द फॉन्ट फैमिली। अच्छा, इसमें recommended fonts इससे रिलेटेड वाले, बिकॉज आई एम यूजिंग द सिमिलर फैमिली, फॉन्ट फैमिली एंटन, और इसमें मुझे इससे रिलेटेड थोड़े से फॉन्ट्स रिकमेंड इसने ऑटोमेटिकली कर दी हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे मैं अपनी ब्रांड किट ऐड कर लेता, तो फिर ब्रांड किट में मुझे जो सजेस्टेड मैंने अपनी ब्रांड के लिए यूज़ करना है मैं वो यूज़ कर लेता। रिसेंटली यूज़ में जो मैंने अपने प्रीवियस डिज़ाइन में यूज़ किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सक्सेस उसकी एक पोस्ट के बाद फॉरन सिमिलर पोस्ट क्रिएट करनी, लेकिन विद अ डिफरेंट थीम, तो मैंने जो प्रीवियसली यूज किया मैं उसमें वो भी ऐड कर सकता था। और ये सारी पॉपुलर फॉन्ट्स की लिस्ट है, इट इट हैज ऑलमोस्ट एवरी फॉन्ट यू नीड। नाम का अक्सर थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज द नेम्स, ये जो कैनवा इज द ओन नेम फॉर द फॉन्ट्स, लेकिन इफ यू सर्च फॉर इट यू कैन ऑलवेज फाइंड द राइट। सेकेंडली, यहाँ पे आपको इटैलिक्स की ऑप्शन मिल जाती है, विच आई कैन यूटिलाइज, अंडरलाइन और बोल्ड की, बिकॉज ये ऑलरेडी एक थिक और हेडिंग वाला फॉन्ट है, यू कैन नॉट यूज द बोल्ड ऑप्शन, तो इट इज ग्रेड आउट। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट की मिल जाती है, यू कैन सेंटर अलाइन, जस्टिफाई एट, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, और आई एम गोना गो विद द लेफ्ट अलाइन। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे आती है लिस्ट की, जो अपने बुलेटेड पॉइंट्स इसमें करने हैं। और इसके अलावा जो जो ऑप्शन बहुत ज़रूरी है वो है स्पेसिंग की। समटाइम्स अब देखें, द स्पेस बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, ये एक हेडिंग के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, और उसके दरमियान लेट्स से ये स्पेस हमारी 1 सेंटीमीटर, जिससे छोटा टेक्स्ट है तो इसमें भी सेम स्पेस है, विच इज़ नॉट राइट। अब आपका जैसे जैसे आप साइज रिड्यूस इसका करते जाते हैं, ये स्पेस शुड ऑल्सो डिक्रीज, तो आप ताकि आपका रेशियो मेंटेन रहे बिटवीन टू। अब मैं इसको क्या करूंगा, बट आई डू इसके, मैं इसकी लाइन स्पेसिंग में डाउन, लेटर स्पेसिंग में भी, और ये लाइन स्पेसिंग, दीज आर टू डिफरेंट। लेटर स्पेसिंग होता है आपके इंडिविजुअल लेटर्स के दरमियान स्पेस। लेट से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरे इंडिविजुअल लेटर्स के दरमियान स्पेस है वो चेंज हो रही है, मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, मेरे लेटर्स और कंडेंस हो रहे हैं। और एक चीज है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, और नाउ इट लुक्स मच बेटर देन दैट स्कैटर्ड वन। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला है, तो आई जस्ट लीव इट फॉर नाउ, बिकॉज ये काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्रॉब्लम है जो मैंने इसमें आइडेंटिफाई की, ये margins. द मार्जिन पॉइंट, अब इसको इट इज गोइंग आउट ऑफ द डिजाइन। अब मुझे यहाँ पे इसके साथ, इस चीज के साथ इसके मार्जिन अलाइन करने चाहिए, लाइक वी कैन पुश इट अप अ बिट, और मुझे इसके ये इट शुड बी समवेयर अराउंड हेयर, एट लीस्ट हेयर, अगर आपने अपने मार्जिन थिन रखने, वरना यूजुअली यू जस्ट skip like this much space in the below, और ये आपका लेफ्ट में स्पेस आपकी, और राइट में इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर हियर, बिकॉज जो पिक्चर और ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं दे कैन मूव अराउंड, और वो आपके डिजाइन के एंड तक हो सकते हैं। और इधर आपके राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, दे शुड बी और आपके बिलो के मार्जिन। तो एवरीथिंग, जस्ट लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Like to add something कि when to that आपका content जो है ना वो ज़्यादा edges की तरफ ना हो, like make sure to keep it in the mostly in the center, कि आपका जो है वो पेज के सेंटर में आए, मतलब edges पे ना जा रहे हो आपके डिजाइन, आपके एलिमेंट्स वगैरह। like picture content थोड़ा सा जा सकता है, that works, but speaking for the textual content, don't make it go to the edges. Okay, if you have any questions, let us know.
लेट वी आर गोना जस्ट आंसर सम क्वेश्चंस, और ये थोड़े से हमने बेसिक्स कवर कर लिए। इसके अलावा आपने, अगर मैं थोड़ा सा इंटरफेस आपको बता देता हूँ, इसमें फाइल में जाएंगे, यू विल फाइंड मेनी ऑप्शंस, लाइक इफ यू वांट क्रिएट अ न्यू डिजाइन, इंपोर्ट, और यू कैन, अच्छा, व्यू सेटिंग्स में एक इंटरेस्टिंग सेटिंग है जो जो आपको रूलर्स और गाइड्स बताती है। अच्छा, अब ये मैंने एट दिस डिजाइन ऑफ इज ऑलमोस्ट 1000 पिक्सल्स। तो ये रूलर्स और डिजाइन जो ये होता है ना, ये आपका काफी हैंडी होता है व्हेन यू आर प्लेसिंग एन एलिमेंट। लेट से मैंने कॉर्नर में कोई चीज प्लेस करनी है, अ लोगो और अ पिक्चर। अब मुझे मेक श्योर करना है कि उसका नीचे से मार्जिन और लेफ्ट टॉप से मार्जिन और लेफ्ट साइड से बराबर हो। तो मैं उसको क्या करूंगा, लाइक अराउंड 200 में उसको यहाँ से रखूंगा, 200 गैप में, और 200 यहाँ। तो दिस इज समथिंग जो एडवांस यूज करते हैं, यू लर्न द यूज ऑफ इट विद टाइम। तो आई डोंट आई रिकमेंड यूजिंग इट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ टू यूज मार्जिन, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर using this something कि आप ऐसी डिजाइन कर रहे हैं which you are gonna get it printed later, because print में the margins, maintaining margins is very important। आप कभी कभार कट आउट करना पड़ता है, और there is a term called bleed margins। उसमें ये होता है, वो आपको इसमें margins में जाके settings में the ones I showed you आप उसमें enable कर सकते हैं। तो whenever you're designing something for print, do add bleed margins, क्योंकि जब हम print करते हैं तो उसके एजेस में ये होता है कि ब्लीड मार्जिन फॉर द प्रिंटिंग पर्पज, उसमें ये होता है कि एजेस उसके कट नहीं होते, आपका फुल पेज नहीं कवर होता, यू जस्ट थोड़ी सी लेफ्ट लेफ्ट टॉप को उसके बॉर्डर्स पे वाइट स्पेसेस रह जाती हैं, ताकि आपकी डिजाइन खराब ना हो। मूविंग ऑन द एलिमेंट सेक्शन अच्छा, वे, someone asked to animate the elements. So it's very simple. What you do is you just select the element, you go on animate, and whatever animation you feel like you want to add, you can add them. I hope that answers your question. इट इज वेरी सिंपल। आप इसमें डिफरेंट एनिमेशन एक्सप्लोर करो, और जस्ट क्लिक ऑन द एलिमेंट, और उसके अंदर एनिमेशन पार्ट में चले जाओ, और इब्राहिम प्लीज एक्सप्लेन एडिटिंग। और इसके हाँ, अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है विच इज कॉल्ड एडिट इमेज। इसका अपना इमेज एडिटर है, आप अपनी पिक्चर्स ऐड कर रहे हो, लेट्स से उसके अंदर जो टॉप पॉइंट्स हैं, आप उसमें अपने कलर्स चेंज कर सकते हो, यू कैन ऐड फिल्टर्स, actually, इफेक्ट्स। sometimes what happens is show the margins option again. Okay, what you do is go to the file, व्यू सेटिंग्स, view settings, and then शो रूलर्स इन। show and then rulers. You get everything you need. So when we've clicked on the margins, it shows के ये आपको थोड़ी सी डॉटेड, बिकॉज इट इज अ वाइट बैकग्राउंड, तो आपको थोड़ी सी डॉटेड पॉइंट्स नजर आ गए होंगे। ये दीज आर योर मार्जिन। और शो, एक इसी के अंदर थर्ड ऑप्शन, शो प्रिंट। यस मारूफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रेजेंटेशन पॉइंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, दे आर ऑलरेडी एनिमेटेड। और प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स को आप उसको रिसाइज करके, दे आर वेरी हैंडी। okay. So some what I was telling was sometimes there are some elements like अगर ये जैसे ball है, whatever it is, a circle, it won't have the option to change the colors by just clicking on them. So what you can do is you can always go to edit image and use the duotone option and just change the color from there. इसमें भी when you select it, you have the option to change the colors from here. So this is for those elements which don't have the color change option. जो बेसिकली कुछ जो हम डिफॉल्ट एलिमेंट्स लेते हैं लेफ्ट हमारे एलिमेंट पैनल से, वो एक सिंगल कलर टोन होते हैं, और उस पर आप कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉर दीज वी यूज द डू टोन पार्ट। अच्छा, Can कैन we import or create custom colors? Yes, we can create custom colors. We can do that by just clicking क्लिकिंग ऑन द here, कलर। and this is how you create your अच्छा custom color. मारूफ, एवरी कलर हैज अ हेक्स कोड, यू शुड नो कि आपके कलर, द कलर यू यूजिंग व्हाट इज द हेक्स कोड। आप उसमें डॉक्यूमेंट कलर्स में, जस्ट लाइक वी शोड इट ऑन द स्क्रीन, कैन यू शो इट अगेन? तो उसमें जाओ एंड जस्ट पेस्ट इट, और आपका इन द हाँ, बॉटम बार, एंड योर कलर गेट्स सिलेक्टेड। और ये एक जो पिक अ कलर फ्रॉम डिजाइन की ऑप्शन है, इफ यू, आप इस पे अपनी पिक्चर ऐड करो, अपलोड एडिट टू डिजाइन, और ये पिक द कलर टूल, आप इसको क्लिक करोगे, इट विल पिक द कलर फ्रॉम द पिक्चर। लेट्स से वेबिनार पे से we've clicked on the we use the ink drop tool, और उसको हम जहाँ भी ड्रैग करेंगे तो वो उस पार्ट का कलर उठा लेगा। तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ इज द रीसाइज ऑप्शन। अच्छा, रीसाइज ऑप्शन में ऐसे होता है कि एक आपने इमेज बना ली, मैंने ये पोस्ट बनाई फॉर इंस्टाग्राम। अब मैंने यही पोस्ट स्टोरी पे भी यूज करनी है, लेकिन फॉर स्टोरी अगर मैं ये यूज करूँगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टोरी का जो साइज होता है, जो रेशो होता है, वो चेंज, इट इज वर्टिकल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी डिजाइन का, आई गेट द ऑप्शन टू रीसेट इसके
और मुझे ऑलरेडी कस्टम मिल जाते हैं, लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इंस्टाग्राम स्टोरी। मैं इसको कॉपी और रिसाइज कर लूंगा, मेरा वही जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक नए पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड आई कैन डिजाइन फ्रॉम देयर। आपको थोड़ी सी चेंजेस ऑलरेडी स्क्वेयर्ड, तो आप इसको ड्रैग वगैरह करके इसी एलिमेंट्स को रेप्लिकेट करके इट इज अ बिट, इसमें एफर्ट करनी पड़ती है बिकॉज यू आर यूजिंग डिफरेंट डिजाइन, लेकिन और इसका भी एक हैंडी चीज है, फिर से आपको साइज के सजेस्ट होने लगते हैं, तो यू यूज कंटेंट फ्रॉम नेक्स्ट Because usually what you're using for a Instagram post, you're not going to use the same thing for your Instagram story. So उसके लिए templates available होते हैं for a very rare case. This is only for Facebook posts and Instagram posts. थोड़ी थोड़ी dimensions में फर्क होता है, आप उस केस में यूज कर सकते हैं। आपने अगर Instagram पे पोस्ट और Facebook पे भी सेम चीज पोस्ट करनी है, so you can resize it and it will automatically adjust according to it. Actually, we have a very limited time now. I guess the time for the session is almost over. So you guys can like explain the options yourself. और हमने इसका जो यूज करने का भी covered almost everything. बाकी इसमें कुछ options होती हैं, you can right click on a design, आपने इसको डुप्लीकेट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक। अच्छा ये पता है क्या होती हैं ऑप्शंस? लेट्स से मैंने ये ना टेक्स्ट इमेज के ऊपर ले आया और आई वांट कि ये जो इमेज की टेक्स्ट पीछे चला जाए और इसमें से सिर्फ 5 कॉर्नर से या थोड़ा सा लेट्स से ये, अच्छा सेंड इट, लेट्स सेंड इट। अब वो मेरा टेक्स्ट इमेज के पीछे चला गया। द प्रॉब्लम इज मैंने उस टेक्स्ट को, वो प्रोमिनेंट होना चाहिए सामने। तो व्हाट आई डू इज के आई विल क्लिक ऑन द एंड आई इमेज टॉप पे आ गई है। वी जस्ट यूटिलाइज ऑप्शंस फॉर दैट। अब मैंने इमेज को अगर बैकग्राउंड पे भी, आई जस्ट क्लिक इट टू सेंड टू बैक, वो इस पे बैकग्राउंड पे चली गई। सॉरी, अनडू, कैन यू अनडू? अच्छा, सेंड टू बैक सेंड्स इट टू द वेरी बैक, मैं इसको सिर्फ सेंड बैकवर्ड कर। So what you can do is to explain it a little more. इसको send to back हम करेंगे। अब देखें ये इन दो circles के पीछे आ गया। So this is for different design purposes you can use this. अच्छा Hassan, we have already like told them about the text to image generator and QR code. These are a bit advanced things. So QR code we, is quite simple. I'd like to get into it a little bit. It's you just enter any URL you want to create the QR code for. So you just go here and enter the link, paste the link, and the QR अच्छा आप code is इसको generated. कस्टमाइज कर सकते हो, यू कैन कस्टमाइज कलर ऑफ योर क्यूआर कोड, मैंने So जो for भी। example, if you're creating it for a brand or something like this, for something for a restaurant, like the when they scan and it points, it redirects to their menu. So if the color scheme of the restaurant is like red and black, you can do what you can do is just मारूक, दिस आल्सो आई वांना मेंशन योर क्वेश्चन हियर कि इसमें ये है कि लेट्स से यू हैव अ वाइट बैकग्राउंड और आपका डिजाइन सारा पर्पल है। यू कैन लाइक पिक अप योर यू कैन यूज अ कलर पिकर फ्रॉम योर डिजाइन। आप अपने जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर कॉपी करें एंड इफ यू जस्ट कम टू हियर और आप इतना कलर पेस्ट करें, इट विल गिव यू द सेम कलर। और इसमें भी मैं वाइट पे जाता हूँ, तो द बैकग्राउंड इज वाइट और इसका जो फोरग्राउंड है लेट्स से ये कर लेते हैं। और अब ये होगा कि आपके वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे लग रहा है इट इज अ फ्लोटिंग एलिमेंट, ये एक फ्लोटिंग से क्यूआर कोड बन के रिलेटेड टू योर डिजाइन। बाकी सारा अगर आपका डिजाइन बैठ और आप कोई भी कलर इसी तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है। कैनवा गेट्स अपडेटेड रेगुलरली और इसमें ऑप्शंस कीप एडिंग ऑन, तो just don't waste time and get into utilizing it because everybody is, or it is very good tool for presentation. I'm repeating that again and again because the presentation के templates and they're really powerful और उसके अंदर animation वगैरह बहुत कुछ। Another handy tool is कि Ibrahim will tell you about the background remover. okay. So when we were talking about the edit image part, we selected something that didn't have a background. But for example, if you want to use your image and you want to remove the background from it, what you can do is simply just go to the edit image tab and click on the background remover. It is one of the smartest background remover tools I've used. Like it does it very nicely. So what this will do is just create a, it will just leave the face in it and remove everything from the background. I think it's taking longer because of the internet. Big no, because the image। अच्छा वैसे इट वर्क्स रियली वेल। जो आपको पहले फोटोशॉप में एक बहुत लंबा प्रोसेस था, इट गेट्स शॉर्ट इन टू अ फ्यू सेकंड्स। इसके अलावा आप पिक्चर में मीनवाइल इट गेट्स लोडेड। आप अपनी पिक्चर में इसके अलावा यू कैन चेंज ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, जो कि
जनरली बहुत हैंडी फीचर्स भी ऑलवेज यूज एंड इमेज एडिटर्स, काफ़ी सारे फिल्टर्स भी हैं। अच्छा, इमेज को डायरेक्टली स्मार्ट मॉकअप पे भी अपलोड कर सकते हैं या ऑप्शंस आ गई हैं। और इमेज, अब ये इट्स टेकिंग टाइम बिकॉज द इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी स्लो। और ये देखें हमारी पिक्चर उस मॉकअप पे पेस्ट होती है, विच इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन कैनवा। ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इन अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और इसके अंदर ये बिल्ट इन आता है। यू हैव टू डाउनलोड और इवन समटाइम्स क्रिएट मॉकअप्स इन सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, जिसमें मोस्टली क्रिएट होता है, और वो बहुत अच्छा, लंबा। फॉर पीपल दैट आर डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड स्टफ, उनके लिए भी ये बहुत हैंडी चीज़ है कि आपने अगर अपना, इफ यू वांट टू शो योर वेब रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इफ यू वांट टू शो हाउ इट लुक्स इन द मोबाइल, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट enter the image here and it shows what it will look on a mobile device or on the laptop. So these are very tools, very helpful. Also, one last thing, कोमल has mentioned an issue. कोमल, this might be due to कि आपका जो डिजाइन है, एक तो मैं आपको I'm gonna just move to the export section और हम डिस्कस करते हैं उसमें आपको how to set it up। और उसका this might be due to कि आपने जो लोगों ने PNG अपलोड किया है, if you picked it from the internet or something, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी काफी लो क्वालिटी हो। और कैनवा एनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस अ बिट, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता। इफ समथिंग इज ऑलरेडी वेरी लो क्वालिटी, तो इट्स बेटर कि आप हाई रेजोल्यूशन के लोगोस इंपोर्ट करो और यूज दैट इन योर डिजाइंस, और वो फिर प्रिंट में भी ठीक रहते हैं। अच्छा अच्छा, इट हैज जस्ट जनरेटेड द फोरग्राउंड इमेज और उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, तो इट्स लाइक बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्म में उसने मेंटेन किया द कलर्स एंड बैकग्राउंड, इसमें कोई also हालांकि। it looks much better now, I हाँ, guess. It matching with the theme, the background was looking quite weird, or it also creates this popping effect of the hair. That's it's like very minute detail, but it adds picture. और सेकेंडली एक बस द लास्ट चीज रिलेटेड टू डिजाइन, जस्ट लुक एट द कलर्स वी हैव यूज्ड। हमने एक ऑरेंज और एक डार्क ब्लू सा थीम यूज किया हुआ है, व्हिच इज बेसिकली जो दीज बोथ कलर्स गेट अलोंग विद ईच अदर। और इसमें सेकेंडली द फॉन्ट मैचेस विद द, हम अगर टोटली ऑरेंज थे इट वुड हैव बीन लुक, वो बहुत वियर्ड लगना था। और हमने एक कंट्रास्टिंग कलर स्कीम बनाई है that along with it। और लास्ट पार्ट हमारा एक्सपोर्ट का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली एक चीज आपने लाजमी करनी है, विच आई ऑफन मिस इन माई डिस, और बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है टू बी ऑनेस्ट, विच इज कि आपने अपने फाइल को यहाँ पे, यू कैन रीनेम योर फाइल एक्सपोर्ट से पहले, लाइक वी हैव रीनेम्ड इट गुड वर्सेस बैड डिजाइन। तो आपने यहाँ पे अपनी फाइल को रीनेम कर लेना, जो आपकी इमेज का नाम होगा व्हेनेवर यू एक्सपोर्ट इट, तो वो इस नाम से सेव दिस। वो टेम्पलेट्स का डिफरेंट नाम रह जाता है एंड यू डोंट रिमेंबर कि आपकी फाइल कहाँ पे upload। Now coming to the export part, all you have to do is just click on the share button. But when you click on the share button, अब इसमें आपके पास बहुत सी options आ जाती हैं. Link shared publicly. अब यहाँ पे देखें, when you click on this copy link, what you can do is just copy the link and send it to anyone you want to. You want someone to edit this design other than you. So you can just send them the link. All they have to do is click the link, and they'll have all the same UI, same interface as you have, and they can edit it, and their edited part of it will be saved. Other than that, what you can do is you can create it a brand template, you can present it, you can upload it on your Instagram. So these are the options. And if you just want to share the link and you don't want them to edit, you can put it on can view, you can put it on can comment. Like you just want their input, but you don't want them to change anything. So for that purpose, you can put it on comment. So coming to the download part, when you click on the download part, you have the file type. Now file type, there are like many different files. आप कौन सा उसको देना चाहते हो? And uh, for each and every design, each and every dimension, you have different file types to save them in. मतलब अगर it's your personal picture, like it's your picture, you can save it in JPG for so that it doesn't consume that much of memory, and it's easily shareable. For websites as well, people mostly use JPGs, uh, so that their website, when the website is loading, it doesn't have much of a big load on it. It can easily just load the pictures. So for PNG is for the best quality. So when you use PNG, you have the highest quality. Like you can zoom in as much as you want. It won't pixelate. Then you have PDF standard. It's for documents and emailing. Then you have PDF print standard. This is also for printing. Like it's quite self-explanatory.
SVG. SVG is for web designs and animations. You won't be using it much, लेकिन इसमें when we are exporting animations to Adobe और या बाकी भी सॉफ्टवेयर तो वी यूज एसवीजी. ये it is an advanced type of thing और ये we don't usually use it. तो बाकी the most suggested type is PNG for your usual PNG or JPEG for your JPEG is actually JPEG. तो we use for sharing it for the digital use और जो print है we use PDF print format. Can you go back to the file type? और इसके अलावा MP4 GIF are for the very short animations and MP4 is the video. अच्छा इसमें I forgot to mention you can edit your video as well. आप इसमें अपना जहाँ पे हमने इन apps में ऑडियो और वीडियो वाला किया था तो you can edit your videos as well. आपकी टाइमलाइन नीचे शो होती है like a proper video editor और आप उसमें animations और वीडियो वाला स्टफ अपना ऑडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं. Even in these posts you can add music और ऑडियो behind it. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. और इसके अंदर अब हमारे पास साइज आते हैं. अच्छा, और जो अभी हमारा आर्टबोर्ड बना हुआ है इट इज ऑलरेडी 1000 by 1000 पिक्सल. तो उसका इट इज स्टैंडर्ड साइज और वो उसी पे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे. And changing the size is also again a pro feature. So we would recommend, if you can, then go for the pro one, because it has much more benefits than the simple one. So it is preferred that you use the pro one. और अब we'll if we increase the size, can you move the slide? अच्छा, तो इससे ये होगा कि your file will get heavy और इसका जो रेशियो है मेंटेन रहता है लेकिन आपकी क्वालिटी मैक्सिमम गेट्स एक्सपोर्टेड. और आई रेकमेंड कि आप इसको हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट करें बिकॉज आर एप्लीकेशंस जितनी भी हैं वो क्वालिटी रिड्यूस करती हैं व्हाइल वी आर अपलोडिंग इट. और एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड विच इज वेरी हैंडी व्हेन यू आर क्रिएटिंग लोगोज और समथिंग. अच्छा, अगर इसी बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक्सपोर्ट करूं, It will have no use because it's already white. So it will be of use if you are using it on something that has a background. But background वाली चीज को अगर आप उसका वो use remove कर दोगे background, it won't have any effect. So what this will help in is uh, लेट्स से मैंने ये जो नीचे QR है आई एम गोना this QR. अगर डिलीट दिस वन बी गोना यूज रेड. अच्छा, अगर अब हमारा जो रेड वाला QR है इफ आई यूज दिस और मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है. अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा इन JPEG और एनी PDF प्रिंट तो वो पता है क्या होगा. इट Let me विल show you. वो विंडोज पे इट विल टेक टाइम वी आर ऑलरेडी. तो अच्छा, आई जस्ट टेल यू कि इससे होगा ये कि आपका ये पूरी स्क्वायर इमेज हो जाएगी एक्सपोर्ट. Sure, the वो zip हो गई. पूरी ये पूरी की पूरी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये ऐसा स्क्वायर और इसके इर्द गिर्द आपको ये वाइट बैकग्राउंड भी नजर आएगा. लेकिन जिस तरह से अभी ये लोगो खुद है विदाउट एनी बैकग्राउंड सिर्फ आपको फ्लोटिंग ये इसका रेड नजर आ रहा है. इट इज विद द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है. अगर मैं इसका आर्टबोर्ड लेट से इस कलर का कर दूं, अच्छा दिस हैज अ वाइट बैकग्राउंड. अब अगर इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड ना होता और ये सिर्फ फ्लोटिंग रेड ऊपर वाला में डिजाइन नजर आ रहा होता. लेट्स ट्राई कि इसका इसमें QR में यू कैन नॉट रिमूव द बैकग्राउंड. तो अगर ये सिर्फ फ्लोटिंग रेड वाला इसके ऊपर हमारे पास होता और ये इस डिजाइन के ऊपर शो हो रहा था तो इट वुड हैव ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इस तरह की चीजों में काफी हैंडी होता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट, One last thing about the शेयर प्लीज शेयर. yeah, I'll just get to that. So there are some other options as well, like this transparency one. What it does is just changes the transparency. Then you can lock the image, you can lock the position. Now you can change the other positions, the elements behind it, the elements around it, but the position of this image will not change. So these are also quite handy when you have too many elements in one picture. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक डाउनलोड. अच्छा, अब डाउनलोड पार्ट में अब देखिए सिर्फ आई हैव 2 पेजेस एडेड और इसमें मैंने सिर्फ एक एक्सपोर्ट करना तो बट आई डू इस के मैं क्या करूँगा. आई जस्ट मूव टू सिलेक्ट पेजेस पार्ट में. इसमें आई जस्ट अनचेक दोज जो मैंने एक्सपोर्ट नहीं करने और ये सिर्फ मेरा करंट पेज रह जाएगा. आई एम गोना अगर मैंने हमेशा से ये लाइक एवरी टाइम मैंने एक्सपोर्ट करना है करंट पेज तो आई सेव दीज डाउनलोड सेटिंग एंड आई जस्ट प्रेस डाउनलोड. वो SPNG फॉर्मेट में डाउनलोड. और if I'm selecting all the pages तो वो एक zip file में होता है. You have to extract it और वो आपकी तीनों files शो हो जाए. I guess that's it for the download part. और जो most important tool है वो है this the link part. अच्छा, इसमें आप you can share this link and और उसमें सारा कुछ वो edit कर सकते हैं your team. तो this is another handy feature जो आप डिजाइन बना रहे हो. तो I guess that's it from our side. We have already taken a lot of time.
So if you have any questions, just mention it in the box. Chat. और लास्ट बस एक we'll make an announcement जो कि competition की है. uh, will shortly submit a deadline और उसमें you have to make a design using Canva. We'll share the details what kind of design we need और हम उसको फिर evaluate करेंगे. और we'll share the details in the WhatsApp group. और आप लोगों ने अपने डिजाइन सबमिट करवाने हैं. What you will if you win, what you will get is कि आपको Canva Pro for the next whole year free access मिलेगी and you'll get added to the GDSC design teams. So that's it from our end. Thank you for joining everyone. Or you can send, or before leaving, just send your LinkedIn accounts in the chat box. Or that's it. And Uh, if you have any questions, like any sort of questions, they are highly appreciated. So let us know if you have any question. And also let us know general review on this session, like uh, if anything can be changed, if anything was missing, let us know. Thank you, Sahar. we would really appreciate your feedback. So just leave a feedback if you want to. And that's it from our end. अगर आप लोगों के कोई question है regarding anything, you can just ask. Okay, that's it. Or you guys can approach us regarding anything via the chat group. Just go to the admin panel and text us whatever you want. Waleed, to answer your question, it's a tool that requires some skill. It's a tool for graphic designing and like इसमें अब आपको बहुत ज़्यादा skillful नहीं होना पड़ता है. Drag and drop है. It's very easy. So if you've attended the whole session, I guess. And one thing for the members who are still here, everybody can use these tools. Like, in being creative is the real thing in this field. So just explore more designs. Use websites like Pinterest, Behance, just general Google searches. You'll find many interesting designs, and follow those designs to create your own post. So that's how you'll understand the graphic design basics. Or then your design will keep improving with time. Or it is not something कि जो आप एक ही दिन में सीख सकते हो. You can just you can just understand the tools and how they work. लेकिन जो ये design sense it develops over the time. So don't get frustrated if you can do it in the first try. Just keep trying. Or best of luck everyone. That's it from our side. And Allah Hafiz. Thank you so much, guys. How can I make money using Canva? अच्छा, was we had planned कि हम ये discuss करेंगे, but I guess we'll discuss it generally how कि हम ये किस तरह से we can create money using these tools, graphic design. और ये हम generally will do a session on freelancing. So we will include specifically Canva in it. So just stay tuned for the next session. I think that's it. Thank you so much, everyone, for joining and bearing with us. Uh, any feedback would be highly appreciated. You can message us on WhatsApp, wherever you want. You can go to the GDSC page. You can message the executive team if you have any sort of questions from anyone. We have expertise of all fields. Just go, just don't feel shy. Just ask whatever you want. Other than that, thank you so much for joining. So Have a good one. the time for the meeting has ended. You guys may leave. Thank you everyone for being here. Thank you guys.